Ashwini? Yes, sir. You can begin. You can begin. Okay, sir. तथागत भगवान बुद्ध, महामानव संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मेरा त्रिवार अभिवादन। डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटिल सर, उप प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र बागड़े सर, इस वर्कशॉप के समन्वयक डॉक्टर सुदेश भोते सर और आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर सिंकुकुमार सिंह सर, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय की ओर से रिसर्च सेल एंड सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च की ओर से 1 वीक ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी का आयोजन किया गया है। आज 3 अगस्त 2022 को स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस पर सभी PhD रिसर्च स्कॉलर्स को अपना मार्गदर्शन देने हेतु मुख्य वक्ता डॉक्टर सिंकुकुमार सिंह सर हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका शब्द सुमनों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सिंकुकुमार सर स्कूल ऑफ एजुकेशन साइंस, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ में प्रोफेसर तथा डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के विभाग प्रमुख के पद पर कार्यरत है। इन्होंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPhil तथा PhD की पदवी प्राप्त की है। इनकी विशेषताएं मेडिसिन, बायोमैकेनिज्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हेल्थ, साइकोलॉजी इन विषयों में है। इन्होंने 3 साल अंडर ग्रेजुएट और 10 साल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया है। इन्होंने अपने एकेडमिक करियर की शुरुआत PIC साडोली कडिम में फिजिकल एजुकेशन से किया। बाद में SFM कॉलेज कुलाम्बरी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक भी रहे हैं। अभी सर फिजिकल एजुकेशन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन के विभाग प्रमुख के पद पर कार्यरत है तथा इन्होंने टोटल 28 जो पेपर है वो प्रेजेंट किए हैं और इसके साथ ही सर PhD के गाइड भी है और उनके PhD अवार्ड हो चुकी है। 11 स्टूडेंट जो है वो PhD की पदवी प्राप्त कर चुके हैं इनके अंडर में और अभी 3 करंटली रजिस्टर्ड है। उसके साथ ही MPhil की जो पदवी है वो भी प्राप्त कर चुके हैं। 28 जो स्टूडेंट्स है वो MPhil की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। सर ने जो है 12 इंटरनेशनल और 44 नेशनल लेवल के जो है वो एज अ रिसोर्स पर्सन करके उन्होंने अपना जो योगदान है वो दिया है। उसी के साथ उनके एकेडमिक्स करियर में वो मेंबर ऑफ BOF, सीनेट बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के भी मेंबर्स रहे हैं। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर अलग अलग संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटर भारत फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इस तरह की अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने अलग अवार्ड्स जो है वो भी इनको मिले हैं। उसमें यंग साइंटिस्ट अवार्ड, अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स भी सर ने प्राप्त किए हैं। इन्होंने टोटल 64 सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में भी अपना योगदान दिया है। इसके साथ सर का परिचय, एक छोटा सा परिचय था। ये छोटा सा परिचय सर का जो है पूरा अब तक का जो उनका करियर चल रहा है उन सारी चीजों को विस्तृत करता है। तो उसी के साथ में जो हमारे प्रमुख वक्ता जो हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस पे मार्गदर्शन करने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर सिंकुकुमार सिंह सर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वह अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर। Hello, good morning. Hello. Yes sir. Over to Dr. Sinkukumar Singh sir. Hello. Okay. Good morning. आप लोग सुन पा रहे हैं? Are you listening me? All of you?
Yes, sir. Okay, thank you very much. First of all, it's my pleasant duty to express my sincere regard and grateful obligations to Principal Dr. Yeshwant Patil sir and Dr. Sudesh sir for giving me an opportunity as a speaker of this national workshop on research methodology for the research scholars. So actually, your college is very active in every area, especially in extension and curricular or co-curricular activities. So during the lockdown period, your college organized several activities on online basis, and you have a really very energetic principal, Dr. Yeshwant Patil sir. So actually, Patil sir is my sir. I very thankful. So I learned a lot of things from Yeshwant Patil sir. So the second thing, Sudesh sir is always contact with me in every activities. Thank you very much, sir. So now I would like to start my lecture. Hello, I would like to start my lecture. The today topic of my presentations is statistical techniques and data analysis. Madam, please आप थोड़ा slide change कर दीजिए. Next slide, please come on the next slide. Yes. So actually, those who are actively engaged in research, especially in PhD or MPhil level, so they should know the statistical techniques or data analysis. So without knowing the statistical techniques or data analysis, you cannot do your research. Those who are engaged in especially in quantitative type of research, actually in the qualitative type of research, there is no need of any statistical applications or any statistical analysis. So here, first of all, I would like to clear the concept of statistical analysis or statistical techniques. So actually, statistical analysis or techniques, sometimes statistical techniques is referred to the statistical analysis, is a data analysis tools that helps to draw meaningful conclusions in a raw and unstructured data. So statistical analysis or statistics involve collecting, organizing, and analyzing data based on established principles to identify patterns in trades. It is broad discipline with applications in academia, business, or social science, genetics, population study, engineering, and several other fields. So all so research is cover the all fields. So statistical analysis have several functions. You can use it to make predictions, perform estimations, create models, reduce risk, and identify the trends. So next slide. So actually, I would like to read the about the statistical techniques. So statistical technique analysis is the process of collecting and analyzing data in order to discover a pattern and trends. It is method for removing bias from evaluating data by employing numerical analysis. This technique is useful for collecting the interpretation of research, developing statistical model and planning survey and studies. So statistical analysis is the scientific tool that helps collect and analyze large amount of data to identify common patterns and trend to convert them into meaningful information. Actually, when you are thinking about research, so everyone knows very well. So research is a combination of two words. Every in search where every represents again and search represents to find out the new facts or new truth from the universe. So without the statistical applications, you cannot find out the new truth or new facts from the universe. So statistical techniques is most important in the every research. So when you are going to apply in hypothesis, when you are test the hypothesis. So the hypothesis cannot be
cannot be tested without the statistical techniques, or even in another area that your presentations or everything. So statistical analysis techniques is very important for the researchers, or those not only in research, in every area, to show this result, evaluating the results. So several things. So next slides. So next slide, you can see here the types of statistical analysis. So here you can also descriptive analysis, interference analysis, several types of statistical analysis which are involved in the research. So first of all, I would like to discuss on the descriptive statistical analysis. Actually, descriptive statistics is very important. Yes, please, next slide. So descriptive statistic analysis, actually, this is very common statistical techniques used in the research. So every research that needed a descriptive statistical analysis. So I am telling about the quantitative type of research. In qualitative type of research, there is no need of any statistical techniques or any statistical analysis. So in simple form, descriptive statistics is the simplest form to statistical analysis using numbers to describe the qualities of data set. It helps reduce large data sets into simple and more compact form for easy interpretations. You can use descriptive statistics to summarize the data from the simple or present a whole simple in research populations. So descriptive statistics use data visualizations tools such as tables, graphs, and charts to make analysis and interpretations easier. Descriptive statistics is not suitable for making conclusion. It can only represent data, so you can apply more sophisticated statistical analysis to draw interferences. Descriptive statistics can use measure of central tendencies, which use a simple value to describe a group. Mean, all of you knows very well. Mean, median, and mode is a central tendency are used to get the central value for a given data set. For examples, suppose that you can use descriptive statistical analysis to find the average age of drivers with tickets in municipalities. So descriptive statistics can also find the measure of speeds. For examples, you can find the age range of drivers with DU and a fault car accident in states. These techniques used to find a measure of speed include range, variation, and standard deviations. So in descriptive statistics also the percentage, range, correlations, both correlations. So actually the descriptive statistics cannot test the significant value, but this is described the status of the variables or the populations. So actually in research, in a descriptive type of research, so this is widely used even in all the research. Even all research, the descriptive statistical analysis is applied for your presentation of data. So suppose that, so you want to present age value or morphological characteristics of any populations. So you can use the percentage, or you can use the mean, median, mode, or the standard deviations. Even the descriptive analysis also tells us the how much differences between the two or more than two variables or two means. So next is the please come on the next slides. So next is the inferential statistical analysis.
So actually, this is very important statistical analysis. So this inferential statistical analysis, we test the hypothesis, especially hypothesis, and this is the powerful statistical techniques to test the significant value, and it's so that your result is either a significant or not significant. So actually, to perform inferential statistical analysis, researchers estimate the parameters of the populations from the sample. They can also perform a test of statistical hypothesis to arrive at a confidence interval and validates or disapprove the generalization mode from the sample. So when you are considering the inferential statistical analysis, this is used to make inference or draw conclusions about a large population based on findings from the sample group within it. It can help researchers to find distinctions among groups present within a sample. Inferential statistical analysis are also used to validate and generalized made about the populations from the sample due to its ability to account for errors in conclusion made about the segment of a large group. So suppose that you are going to test a hypothesis. Suppose that you are taking a research hypothesis or alternative hypothesis, and you are going to test your result is the significant or not. So when you are choosing the statistical techniques, the statistical techniques that test the significant level. So even in previous statistical techniques, descriptive, so the mean, median, mode, or percentage cannot test the hypothesis. Either your hypothesis is the null hypothesis or your hypothesis is the research or statistical research alternative hypothesis. So only inferential statistical analysis that test the significance. So there are non-parametric or parametric research techniques that hello. जब मैं लगा था तो मुझे बोलते थे मास्क लगा रहे हैं. Hello. Hello. Yes sir, you are audible. हाँ, yes. लगता है कोई दूसरे बात कर रहा है जो है ना. Yes sir. हाँ, तो okay madam. So actually when you are consider the parametric inferential statistical analysis, so these includes the one-way analysis of variance or t-test or analysis of covariance. This is called the ANCOVA, or even in the regression analysis, multivariate analysis. So there are so many statistical techniques available in our society that test the hypothesis. So I will later explain the how to test the hypothesis. So another hypothesis. Please come on the next slide. Hello. Hello. Please come on the next slide. अमित कजबीर सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए. मैडम आप स्लाइड शेयर करेंगे या ऐसे में बताने लगूं? यस सर. भोते सर प्लीज शेयर स्लाइड. भोते सर. भोते सर. Please share a slide. Yes, sir. So a special request to all the participants. So please don't disturb us. So I will give you a 10 to 20 minutes for discussions of this topic. Okay. So you please mute yourself. So now you come in the next slide. So next slide.
Please come on the next slide. Yes. So the another no sir. Previous associational statistical analysis. नहीं आता मैं कब बसता हूँ बसता Yes. Please hold. So the associational statistical analysis actually associational statistics is a tool research used to. So please previous slides पे आइए. Please come on the previous slides. Okay, so I would like to. So the actually associational statistics is the most advanced type of statistical analysis and requires sophisticated software tools for performing high level of mathematical calculations. So आपने SPSS देखा होगा, you heard about the SPSS. So many software techniques available in our society that analyzes the data through using a software. So in this statistical analysis, to measure association, researchers used a wide range of coefficient of variations, including correlations and regression analysis. So associational statistics is tool researchers used to make it predictions and find causations. They use it to find relationships among multiple variables. It is also used to determine whether researcher can make inference predictions about data set from the characteristics of another set of data. So now I would like to come on the another statistical techniques. This is called the predictive analysis. So the predictive analysis used predictive. So please come on the predictive analysis. Next. Yes. Hold. So actually, predictive analysis is a branch of business intelligence in many organizations with operations in marketing, sales, insurance, and financial service. Rely on data to make long-term plans. It is important to note the predictive analysis can only make hypothetical forecast, and the quality of the predictions depends on the accuracy of the underlying data sets. So in a predictive analysis used powerful statistical algorithm and a machine learning tools to predict future events and behavior based on a new and sophisticated data trends. It relies on a wide range of probabilistics techniques such as data mining, big data, predictive modeling, artificial intelligence, and simulations of guess what is like to occur in the future. So actually, this is widely used for the weather forecast. So you heard about the weather forecast. So that on which day the rain is come, or which day the storm or cyclone is come. So all these are analysis due to predictive analysis. So nowadays this is very common due to this analysis. So we more and more alert about the future's problems or the any future disasters. So this is a very important statistical analysis that used in the research. So next is the prescriptive analysis. So please come on the next slide. So hello, prescriptive analysis. इससे पहले आइए. Prescriptive. Yes. So actually, prescriptive analysis help organizations use data to guide their decision-making process. Companies can use tools such as graph analysis, algorithms, machine learning, and simulations for the types of analysis. So prescriptive analysis helps business make it best choice from several alternative courses of action. So actually,
all we know about that this is the age of globalization, and business is the important factors in the globalization. So one country to another country, even one continent to another continent, all these are come on the one roof, and due to the business. So prescriptive analysis is a very prevalent and common to use a business, and this is give you a better choice for the alternative actions. So next is the exploratory data analysis. So please come on the next slide. So actually, exploratory data analysis is the technical data scientists use to identify patterns and trends in the data set. They can also use it to determine relationship among samples in a populations, validate assumptions, test hypotheses, and find missing data points. Companies can use exploratory data analysis to make it an insight based on a data validated data for errors. So it actually exploratory data is widely used. So actually this is the explain all the things in a very minor way and very clearly. So in the applied types of research, so this is very important. So all of you know very well, actually there are three types of research. First is the fundamental research, second is the applied research, and third is the action research. So even in the action in applied research, so all this analysis comes under the applied research. In when you are going to thinking about the fundamental research, so in a fundamental research, so due to this research, so this enhance our knowledge, and the applied research is to solve the problem. Either your problem is practical or the theoretical. So in all these type of analysis, so very rarely used in the action types of research. So next is the causal analysis. So next, please come on the causal analysis. Next slide. So actually, when you are discuss on the causal analysis, uses data to determine causations or why its things happen the way they do. It is an integral part of quality assurance, accident investigations, and other activities that aims to find the underlying facts that lead to an event. Companies can use causal analysis to understand the reason for an event and use this understanding to guide future decisions. So actually, this type of analysis generally used by the company or the firms or corporate life. So actually, all these are the causal analysis. अगर मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, हिंदी के साथ साथ आप बोलेंगे तो मैं मराठी में बोलना चाहता हूँ। ये जितने भी आपने एनालिसिस देखे हैं, वो सभी केवल जो है सो अप्लाइड रिसर्च में ही यूज किए जाते हैं। और आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी लेवल का है, एमफिल लेवल का रिसर्च, वो रिसर्च जो है सो अप्लाइड टाइप्स ऑफ रिसर्च है। दिस इज नॉट कम्स अंडर इन अ फंडामेंटल रिसर्च और इन कम्स इन द action research. So all you are involving in the applied types of research. So in the applied types of research, so statistical analysis is widely used, especially when you are involving in the quantitative types of research. So now I would like to discuss on the statistical analysis process. Okay, so please come on the next slide. So actually, please wait. So actually, I would like to establish the relationship or differentiate between the descriptive methods of statistical analysis and interferences methods of statistical analysis. Actually, these two techniques is widely used in the research. So if you are going to test the hypothesis, suppose that
So you are going to compare the three populations. Okay, so if you are going to compare the three populations in your hypothesis, so you must be use if your research is the parametric, so you must be use a one-way analysis of variance. So later I will discuss on the one-way analysis of variance, because one-way analysis of variance is very powerful statistical techniques. So give us a result is a very in a very authentic way. So this is very authentic statistical techniques used in the every research. So in the descriptive method, so actually descriptive method only descriptive methods जो होता है वो आपको only describe करके बता देता है कि उसका present status क्या है, लेकिन inferential methods में जब आप जाते हैं तो ये आपको बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस लेवल पे जो है सो आपका वो सिग्निफिकेंट है. सो एक्चुअली अनोवा का मैं इसलिए बात किया मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जो अप्लाइड टाइप्स ऑफ रिसर्च में यूज होता है. तो जो भी आपका रिसर्च डिजाइन हो, चाहे आपका रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव हो या जो भी रिसर्च डिजाइन हो, तो उसमें अनोवा जो है सो यूज होता है. सो अनोवा is must use in all types of research, in all methods of research. Okay, so please do not confuse the types of research and the methods of research. Actually, the several students, those who are is doing their PhD, so they are confused in types of research. सभी ये ऐसे सोचते हैं कि the experimental research or the descriptive research or any types of historical research, this is the types of research. But I would like to clear that. So this is not types of research. So fundamental research or the applied research and action research, this is the types of research. Okay, so experimental research or descriptive research, this is the method of research. This is not a types of research. So please don't confuse. So next slide, statistical analysis process, please come on the. Hello. So please come on the next slide. Yes. So actually, statistical analysis process is a very important process in any research. So please, पहले वापस आइए, please. Please come on the previous slides. Yes, please hold here, hold. नहीं, आइए next, आगे आइए. Yes, please hold. यहीं पे रुक जाइए. Please hold. So actually, you can see here. So there are 5 major steps involved in the statistical analysis process. So first is the data collections. In first step in a statistical analysis, the data collections. You can collect data through primary or secondary sources such as survey or customer relationship management sphere, online queues, quiz, financial reports, and marketing automation tools to ensure the data is reliable. You can choose data from the sample that is representative of the population. For example, company might collect data from previous customer to understand buyer behaviors. So actually, there are generally there are 2 sources of data collection. So all of you know very well. So the primary source of data and the secondary source of data. So in a primary source of data, actually, when you are going to collect your data in first time for your own use, this is called is the primary source of data. आप इस बात को जान लीजिए कि 2 प्रकार का डेटा होता है. डेटा कलेक्शंस जो आप करते हैं, तो 2 प्रकार का डेटा सोर्स होते हैं. So there are 2 sources for data collections. This is called is the primary source of data and another is the secondary source of data. In the primary source of data में आप क्या करते हैं कि आप पहली बार आप अपने यूज के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा रहता है. ठीक है. So the data collect in a first time
by the investigator for their own usage or for their own need in a research. This is called is the primary source of data. Second is the secondary source of data. So actually, secondary source of data, this is not your data. This is the data of government agency, other organizations, another persons, another individuals that you can use. So even in the journals, books, the submitted thesis, the published materials, all are the comes in the secondary source of data. But when you are taking a secondary source of data, so you must be mention the sources from which means that so you can collect from the which sources. अगर आप sources नहीं देंगे, if you are not give sources, then it will come on the plagiarism. This is called in a copy. Okay. So secondary data में आपको sources देना पड़ता है और आपको उसको reference में यूज करना पड़ता है, नहीं तो वो जो है सो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आ जाएगा। और अभी जो यूजीसी ने नया नियम लाया है, सो यूजीसी एक्चुअली पब्लिश्ड अ सर्कुलर about the research on a plagiarism policy. So government of India, UGC is a follow the plagiarism policy. So previously there are a 30%. So now the 10%. So 10%. So this is very strict. So next is the data organization. So under the data organizations, so actually this is the next steps after data collections is a data organizations. This is also known as the data cleaning. This stage involves identifying and removing duplicate data in inconsistencies that may prevent you from getting an accurate analysis. This step is important because it can help companies ensure the data and the conclusions they draw from the analysis are correct. So actually, data organizations is a very important after the data collection. So you also scrutinize your data. आप उसमें कहीं data में आपने ये देखा होगा कि so error की संभावना रहती है कि actually there are 2 or 3 types of error. So वो error है कि नहीं? Suppose that अगर आपने कभी questionnaires का use किया है, प्रश्नावली का use किया है, so you use in a प्रश्नावली, okay? So you want to collect the data from the प्रश्नावली questionnaires, okay? So the respondent जो आपको data देने वाले रहते हैं, जिसको हम respondent बोलते हैं, sample बोलते हैं, वो क्या है कभी-कभी वो questionnaire को ठीक से भरते नहीं, okay? अब वो ठीक से उसको भरते नहीं या ठीक से वो अपना इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, सो आइदर दे हाइड इंफॉर्मेशंस और उन्होंने ठीक से नहीं भरते तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको डेटा को हटाना पड़ता है। तो ये जो डेटा हटाना है या फिर डेटा फिर सेटिंग करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, सो दिस इज कॉल्ड इज द डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट इज द डेटा presentation. So actually data presentations is a third procedure of the statistical analysis. So in data presentations, it is an extension of data cleaning, as it involves arranging the data for easy analysis. Here you can use a descriptive statistics tool to summarize the data. Data presentations can also help you to determine the best way to present the data based on its arrangement. Okay, जब आपने अभी देखा है कि हमने आपको बताया कि also told about the SPSS. So SPSS में आपको डेटा जो है सो आपको भरना पड़ता है, आपका जो न्यूमेरिकल्स डेटा है वो भरना पड़ता है, ठीक है। आपको सबसे पहले वो चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करने वाले हैं और उनके स्टेप्स के अनुसार आपको जो है सो डेटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भरना पड़ता है, उसके बाद ही उसका आपका रिजल्ट आता है। सो अनदर इज द डेटा एनालिसिस। सो एक्चुअली मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है कि डेटा एनालिसिस भी इस लेक्चर्स का जो टॉपिक है उसके पार्ट के अंतर्गत आते हैं। सो डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाइंग पैटर्न, ट्रेंड्स एंड relationships using statistical techniques such as
inferential or associational statistical analysis. You can all use computer software like a spreadsheets to automate this process and reduce the likelihood of human error in the statistical analysis process. This can allow you to analyze data efficiently. So another is the data interpretations. So in a data interpretations, this is the this is the last step. This step in which provide conclusive result regarding the purpose of the analysis. After analysis, you can present the result through using a charts, report, scorecards, dashboard to make it accessible to non-professionals. So suppose that. So the interpretations of the analysis is impact of 400 workers factory on a crime rate in a small town with the populations of 10,000 residents can show the declining rate of criminals activities. You may use in the line graph to display this decline. So actually डेटा इंटरप्रिटेशंस में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने लैंग्वेज में उसको आपको जो सो बताना पड़ता है और उसको आपके पास जो भी आपको डेटा प्राप्त होता है, जो भी आपका कैलकुलेटिंग वैल्यू प्राप्त होता है, उसके अनुसार आप उसका जो है सो कंक्लूजन्स निकालते हैं और वो कभी-कभी आप उसको डिस्कशंस में भी जो है सो आप जब आप रिसर्च कर रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग टू डू रिसर्च और तो आपको उसको कभी-कभी डिस्कशंस में भी यूज करना पड़ता है कि नहीं हमारा स्टडी ऐसा बोल रहा था, दूसरे का स्टडी ऐसा था, तीसरे का स्टडी ऐसा था, तो उसका आपको एक प्रोबल रीजन देना पड़ता है. तो डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए आप टेबल्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज अ टेबल्स, यू कैन यूज अ ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. So this is the last step of the statistical process. So now come on the next slides. Benefits of statistical analysis. So actually, statistical analysis can be called a boon to mankind and has many benefits for both individual and organizations. So here you can give him below the sum of the regions why you should consider investing in a statistical analysis. First is that it can help you determine the monthly, quarterly, yearly figure of sales profits and cost, making it easier to make your decisions. So actually ये आपको सभी कुछ बताता है कि you can compare by कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है. और ये आपको जो है सो सभी डे टू डे लाइफ का जो फिगर्स जो है सो आपको देता है. So another thing is that it can help you make informed and correct decisions. So another benefits of the statistical analysis, so it can help you identify the problems or causes of the failure and make corrections. Suppose that it can identify the reasons for increase in total cost and help you cut the wasteful expenses. So it is also helps to conduct market analysis and make it effective marketing sales in the strategy or in any area. So this is also improve the efficiency of the different process. So actually there are several benefits of statistical analysis, not only in research, in the every area. So if you are prepare a project, if you are prepare another documents, so everything statistical analysis is used. Okay, so please come on the next slide. Hello. Actually this is the statistical analysis methods. So you can see here actually mean standard deviations. So I would like to start from the mean. So mean, this is often called is the average mean, is one of the most popular methods for statistical analysis. So mean determines the overall trends data and it is very simple to calculate. So mean is calculated by summing the numbers in the data set together and then
dividing by it by the number of data point. So despite the ease of calculations and its benefit, it is not advisable to resort to mean as only a statistical indicator, as it can result in inaccurate decision making. So actually आप मीन देखते हैं, मीन आपको हमेशा यूज पड़ता है जब सपोज दैट कि आपने टी टेस्ट लिया है, सो आपको दो ग्रुप को मेजर करना चाहते हैं, जैसे आप नागपुर और औरंगाबाद के जो है सो मार्केट का जो है सो आप किसी चीज का जो है कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, ओके। तो उसको कंपैरेटिव स्टडीज करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना, सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें सेट करना पड़ता है। तो वी सेट द सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ओके। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू में क्या होता है, नॉट सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, चलो इनके मार्केट और नागपुर के मार्केट और औरंगाबाद के मार्केट में नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट में कौन ज्यादा है, इसके लिए जो है सो जब हम फिर आते हैं तो हमें फिर मीन की तरफ जाना पड़ता है, और जिसका मीन ज्यादा रहता है उससे हम फिर इस बात का पता लगाते हैं कि मार्केट का जो वैल्यू है वो किसका ज्यादा है, औरंगाबाद का है या नागपुर का है। सो सेकंड इज द स्टैंडर्ड डेविएशंस। सो एक्चुअली standard deviations is another way, very widely used statistical tools or method. It analyzes the deviations of different data points from mean of the entire data set. So standard deviations also determines how data of data set is spread around the mean. You can use it to decide whether the research outcomes can be generalized or not. So actually standard deviations क्या करता है, जो भी एरर्स है उसको जो है सो एक्चुअली ये रूट स्क्वायर होता है किसी चीज का जो है ना, उससे क्या होता है कि आपका रूट स्क्वायर में जो भी निगेटिविटी रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द रिग्रेशन। सो एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड। So actually regression is the statistical tools that helps determine the causes and effect relationship between the variables. It determines the relationship between dependent and independent variables. It is generally used to predict future trends and events. So actually when you are going to establish the relationship between independent variable and the dependent variable, so जब भी आप रिसर्च करते हैं, when you are going to do research, so actually two variables are present in the every research. This is the dependent variables and the independent variables. आप जब भी कोई उसका कॉज या इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे नहीं देखते। सो रिग्रेशन क्या करता है, सो दिस इज एस्टेब्लिश, दिस इज द प्रिडिक्ट वैल्यू of dependent variables, predict relationship between dependent variables and the non-dependent variables. So next is the hypothesis testing. Actually, hypothesis testing is very important in research, especially experimental type of research. So before discussion of hypothesis testing, so I would like to discuss on the in very short the hypothesis. So all of you know very well. So hypothesis is a tentative answer to the questions which is raised in your study. So hypothesis is the intelligence guess or intelligence idea of the researcher. So actually hypothesis give you a right track. So where you are going to your research. So suppose that, so you are in one big dark room. आप एक बहुत अंधेरे रूम में बंद है, ठीक है, और उस अंधेरे रूम में एक छोटा सा जो है सो निकलने का एक खिड़की या दरवाजा है, एक छोटा सा, ठीक है। अंधेरे में कोई आपको ये बोले कि आप उस आपको कोई बोले कि उस अंधेरी रूम से जो है ना वो बड़े हॉल से वापस जाओ, तो आपको क्या है, आपको बाहर निकलने के लिए जो उसका दरवाजा है उसको ढूंढने के लिए बहुत वक्त जाएगी, नहीं भी ढूंढ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कोई एक टॉर्च लाइट दे दिया और टॉर्च लाइट देने के बाद आपको ये बताया
कि अब आप रूम से बाहर जाओ, उस डार्क रूम से बाहर जाओ, तो आप इजीली उस टॉर्च लाइट से क्या है उस दरवाजे को ढूंढ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो उसी तरह जो है सो रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है। सो हाइपोथेसिस क्या करता है, आपको जो है सो राइट डायरेक्शंस एंड राइट ट्रैक देता है। हाइपोथेसिस गिव यू राइट डायरेक्शंस एंड राइट ट्रैक टुवर्ड्स योर रिसर्च। सो एक्चुअली generally there are two types of hypothesis. One type, first type is the research hypothesis. This is called also called is the alternative hypothesis, and another is a null hypothesis. This is also called is the statistical hypothesis. So in our alternative hypothesis, alternative hypothesis state that so there is a significant relationship or there is a significant difference between two or more than two means or two variables or two populations. But in a null hypothesis, so null hypothesis states that there is no significant difference or no significant relationship between two means or more than two samples or more than two variables. So actually hypothesis, when you are going to formulate the hypothesis, so this is depends on your types of your research, depends on your methods of the research. Actually hypothesis deciding, actually this is the rights of the investigator or this is the right of the researcher. So he choose which type of hypothesis, but generally actually the several data or the several scientists told us. So if your research is the experimental types of research, so you must be formulate the research hypothesis or the alternative hypothesis. This is the positive way of hypothesis. Okay. So when your data is very large, okay, so you can also choose alternative hypothesis or research hypothesis. So generally in the survey type or descriptive type of research, so several researchers that formulated the null hypothesis or the statistical hypothesis. Null means nothing. So this is no significant, tells us no significant difference between the means. So another is the sample size determinations. So next. The sample size determinations or data sampling is a technique used to drive a sample from the entire populations which represents of the populations. So this method is used when the size of your population is very large. You can choose from among the various data sampling techniques such as the non-probatic or probatic sampling techniques, that is simple random sampling, convenience sampling, snowball sampling. So several type of sampling method techniques available. So this is depend on your study and the interest of the researchers. So next. Actually, hello. Hello. So actually, hypothesis testing through one way of analysis. So actually, मैं बहुत बिजी हूँ, हमारा टाइम जो है सो मुझे मीटिंग है हमारा 12 बजे, मुझे जाना है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि the aim of hypothesis testing is to be true. Hypothesis testing or significant testing is the method for testing or claim or hypothesis about a parameters in a populations using data measure in the sample. So in the next slide, मैं मुझे कभी फिर बाद में कभी मौका मिले तो मैं आपको इस पे मैं बताऊंगा। ये मेरा बहुत ही इंटरेस्ट का एरिया है। ये सभी हाइपोथेसिस का जो नेचर वगैरह मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा जो समय की वो है। फिर भी आप 10 मिनट जो है ना, 10 से 15 मिनट आपको मैं देता हूँ। आपको रिसर्च में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो है सो पूछ सकते हैं। जो भी संभव होगा मैं आपको जवाब दूंगा। आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों में पूछ सकते हैं। हेलो।
पार्टिसिपेंट्स, आपको हाँ। कोई भी डाउट्स है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। इस लेक्चर से नहीं तो दूसरे कोई भी रिसर्च के मामले में जो है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो है ना। किसी के पास कोई क्वेश्चंस है? Any participants? Any participants? You have explained very nicely, sir. हेलो, कोई है? किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं सर के सामने। ये भी सेशन पिछले सेशन जैसा इंटरेक्टिव हो जाएगा, है ना? हाँ, आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने पूरा वो दिया है, 10 से 15 मिनट आप जो है डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, जो है ना। So you can discuss on 10 to 15 minutes, जो है सो। Participants, हमें लगता है पार्टिसिपेंट्स के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, जो है ना। हेलो, So all doubts has been cleared already, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम। Thank you so much, sir, ओके for this interactive session. Especially प्रिंसिपल अश्विनी, प्रिंसिपल सर Yes, भी sir. जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो बात रखेंगे अपनी। हाँ हाँ, रखिए, बात पूछ सकते हैं, जो है ना। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि Okay, कोई sir, okay, पूछे हमसे, नो जो है नो ना। नो, प्रिंसिपल सर मीटिंग में है, मुझे लगता है वे अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा yes, अच्छा। sir, yes, sir, yes, sir. Okay. मेरा Respected भी principal sir. Yes, sir. नहीं, मेरा भी 12 बजे से मीटिंग है हमारा, जो है ना, इसलिए जो है ना मैं भी जो है ना जल्दी। Okay, sir. Okay, sir. No problem. I would like to request to respected principal sir, अगर आपको हमारे जो भी PhD स्कॉलर्स है उनसे कुछ बातें अगर कहनी है तो मैं अनुरोध करती हूँ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से कि वो अपना मार्गदर्शन स्टूडेंट्स को दे। डॉक्टर यशवंत पाटिल सर। भोते सर, शायद प्रिंसिपल सर लेफ्ट हो चुके हैं, शायद टेक्निकल कुछ इश्यूज की वजह से। तो वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़े। भोते सर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सर, प्रिंसिपल सर इज हियर। हेलो सिंधु सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? थैंक यू सर। एकदम बढ़िया। हाँ सर, मेरे 12 बजे मीटिंग है सर एक। हेलो, इसलिए हाँ मैंने। हाँ हाँ, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जी सर। हमारे पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित मधुकरराव वासनिक आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज जो नेशनल हमारा जो वर्कशॉप है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, आज हमारा 5वां सेशन चल रहा था। उसमें हमारे दोस्त और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर सिंकुकुमार सिंह, इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस इसके ऊपर मार्गदर्शन किया। हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे रिसर्च स्कॉलर, हमारे यहाँ के प्राध्यापक और विविध अलग अलग महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी प्राध्यापक वृंद, उनको ये रिसर्च के बारे में एक पूरा सखोल ज्ञान प्राप्त हो,
इस दृष्टिकोण से हमने ये उपक्रम चालू रखा है और एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हमारे प्राध्यापकों के लिए अलग अलग विषयों का हमने यहाँ आयोजन किया हुआ है। उसमें आज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस के ऊपर सिंकू कुमार सिंह जी ने बहुत ही अच्छा अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं सिंकू कुमार सिंह का मेरी संस्था की ओर से और हमारे कॉलेज की ओर से मैं शुक्रगुजार हूं। और इसी प्रकार सिंकू कुमार सिंह हमें सहकार्य करते रहेंगे। और सिंकू कुमार सिंह ऐसे एक बिजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रोफेसर है कि वो हरदम कभी भी आप उनको देखते तो बिजी रहते हैं। आज भी अभी मुझे रिक्वेस्ट किया तो सिंकू सर मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा। और हमारे ये रिसर्च वर्कशॉप के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है और आज का जो स्टैटिस्टिकल टेक्निकल डाटा एनालिसिस का वर्कशॉप लेक्चर जिन्होंने सुना है उनका सबका मैं शुक्रगुजार करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद सिंकू कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर यशवंत पाटिल सर जो कि हमारे माननीय प्राचार्य हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके साथ ही हमेशा ही जैसे ही हमको पता है कि प्रिंसिपल सर का हमेशा ही मार्गदर्शन हम लोगों को मिलते रहता है, बट आज स्पेशली उन्होंने हमें अप्रोच किया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलते मुख्य अतिथि, जो हमारे मुख्य अतिथि जिनको हमने एक व्याख्यान मार्गदर्शक के रूप में आज पाया, जिन्होंने अलग अलग प्रोसेस समझाई हमें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्क्राइब की है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हमें बताई है, स्पेशली मैं उनके एक एग्जाम्पल को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया टॉर्च, तो स्पेशली मैं हमारे जो रिसर्च सेल है, हमारा जो ऑनलाइन वर्कशॉप का जिन्होंने आयोजन किया है, उन सभी को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दिया है, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर के लिए, वो एक टॉर्च के जैसा ही काम करेगा। क्योंकि अगर हमारे हाथ में अगर टॉर्च दिया है, मतलब ये ऑनलाइन वर्कशॉप के थ्रू उन्होंने हमारे हाथ में एक टॉर्च दिया है कि आपको अंधेरे में से किस तरीके से बाहर निकाला जाए, तो ये इसी के लिए एक छोटी सी कोशिश थी जो ऑनलाइन हमारे यहाँ पर वर्कशॉप लिया गया उसके थ्रू। तो जो हमारे आज के मार्गदर्शक थे, हमारे प्रमुख वक्ता थे डॉक्टर सिंकुकुमार सिंह सर, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। उसके साथ ही हमारे प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटिल सर, समन्वयक हमारे डॉक्टर सुदेश भोते सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मार्गदर्शन किया और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये वेबिनार है, जो वर्कशॉप है, वो हमारा बहुत अच्छे से जो है वो सक्सेसफुली पॉसिबल हो सका। उसके साथ ही हमारे डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के स्टाफ, जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, जिसके अकॉर्डिंग हम ये वर्कशॉप का आयोजन कर सके, उन सभी का मैं यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ और उसके साथ ही उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बट सबसे लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स के बिना ये जो हमारा वर्कशॉप है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Okay, thank you, sir. Thank you very much. Okay. थैंक यू वेरी मच सिंकू सर। थैंक यू सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के लिए भाई चलो काम हिंदी announcement, से कल सुबह कल सुबह 10:30 बजे रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस टॉपिक पर जो है वो लेक्चर है 10:30 बजे। तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो वापस से जुड़ेंगे। Okay, sir. Thank you. डॉक्टर प्रसेनजीत पांडा जो बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो जो उस पर अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
सारे स्टूडेंट्स जो है उस लेक्चर के लिए प्रेजेंट रहे। और आज का सेशन थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो सकता था, है ना। तो है कि सवाल आप पूछना बंद मत कीजिए, सवाल ही हम लोग जो है काफी अच्छे से रिसर्च को समझ सकते हैं, है ना। दो तीन दिन काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। आज थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट था लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है। जब एक्शन लोग करना, मुझे लगता है कि जो रिसोर्स पर्सन है उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट जो है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, अभी सुन लिया, बाद में पढ़ लें और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा होता नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन करते है और फिर आनंद फानंद में आप जो है वो रिसर्च को फिर आप आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है, रिसोर्स पर्सन आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए 10 मिनट वो स्पेयर कर रहे थे, तो आपने उसका फायदा उठाना था। एनीवे, आगे और 1-2 लेक्चर बचे हैं फाइनली, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आज का सेशन यहाँ हम लोग